Hello students, welcome. Welcome to MGM Education. We are now going to read about the fifth and sixth paper of papers on WIT by Joseph Addison. Here in the first, second, third, fourth, we have studied a lot of things regarding WIT he has described, and he said about all the false WIT. And then now he is going to speak here about the true WIT, okay, as well as the mixed WIT. Let us begin the paper fifth. Let us study the point coverages of the fifth paper. Number one is relating to John Locke. He said, what is the difference between the wit and judgment? Number two, he has given a philosophical account in which he focused on resemblance and congruity. Then he spoke about true wit, that is consisting of resemblance and congruity of ideas, right? After that, he just compared with the false wit with the true wit using Dryden, Milton, and others' opinion. And then he talks about mixed wit and the branches of mixed wit, how it has been used. Finally, he referred to the writings of wit by the French critics, Goths, Romans, and Greek. And also he has mentioned about the reader's observation on their writing skills. And he overall covered, the three types of wit here: false wit, true wit, and mixed wit. Okay. Now what he says, let us go a little deep into the matter. Here he begins with Mr. Locke as an writer with an admirable reflection upon the differences of wit and judgment, whereby he endeavored to show the reasons why they are not always the talents of the same person. His words are as follow: that there is regions of common observation that men who have a great deal of wit and prompt memories have not always the clearest judgment or the deep reason. He says, for wit lying most in assemblage, means gathering of ideas and putting those ideas together with quickness and varieties, wherein one can found a resemblance or congruity, thereby to make up pleasant pictures and agreeable visions. That means all they are manipulating in the fancy. Acha. On the contrary, he says that the talent lies in separating carefully one from the other ideas, wherein we can find the least difference to avoid the similitude. Similitude will be a kind of resemblance. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ resemblance and congruity. A resemblance ବୋଲେ କ'ଣ? Looking same age, right? ଟିକେ ସେମ୍ ଥିବାଟା ରାଇଟିଂକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ. And congruity ବୋଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ a point of agreement or a point of agreeing. Then he says, this is a way of proceeding quite contrary. Contrary ମାନେ ବିପରୀତରେ ଯିବା. To metaphor ବୋଲେ comparison and allusion. Allusion ବୋଲେ କ'ଣ? Indirect reference, wherein for the most part lies the entertainment and pleasantry of wit. Okay, which strikes so lively on the fancy that it is acceptable to all the people, and the reader also get very much excited while they read these things. They maintain this balance between resemblance and congruity in their writing बोल के हम ଏବେ ଜାଣିଲେ। नेक्स्ट ଯିବା ତାଙ୍କର philosophical account କ'ଣ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର philosophical account ବୋଲି କହିଥିଲି
देखो एबे सेटा डिस्क्राइब करिया से कहउचंती कोन आई हैव एवर मेट with of wit which generally though not always consist in such a resemblance and congruity of ideas as this author mentions, right? I shall always add to it by way of explanation that every resemblance of idea is not that which we call it wit. बोले सब resemblance of idea को आमे wit कोई परिवा नहीं, right? बुद्धिमत्ता कोई परिवा नहीं unless देखो condition रखिला unless असला माने condition बोल जानी बात it be such an one that gives delight and surprise to readers. Let condition कौन रखिला unless it give a surprise to the reader को जदि आमे surprise किछि कला भलिया लागिवनी हम राइटिंग रु तबे आमे एटा को wit बोली कहि परिबा नाही से कहउचंती these two properties seems essential to it तेनु करी कौन से two properties गुटे होची resemblance आ गुटे होची congruity ए दीटा जिंस essential to it more particularly the last of them, right? And therefore the resemblance in the ideas be wit. It is necessary that the idea should not lie too near one another. फिर आ गुटे कंडीशन इटा रखला कौन रखला सेटा the idea should not lie too near अति निकट रहबा कहबनी one another in the nature of things where the likeness is obvious. It gives no surprise कारण एटी सरप्राइज नथिबो से कोन कहतिला there must be surprise to the readers बोली कहछि नै कि while reading. So to compare one's singing to that of another or to represent whiteness of any object like that of the milk or snow बोली से कहछंती the varieties of its color may those of the rainbows cannot be called wit. You know why it cannot be called as wit? Unless there is some resemblance. Jodi resemblance nothibo bole we cannot call it. At the same time se कहछंती further congruity discovered in the two ideas is capable of giving the reader some surprise. अच्छा किछि सरप्राइज जतोळ रहइबो रीडर पाई तबे ही कोन हबो सेटा को आमे ये कर पारे आउल कहछंती आ मिस्टर लॉक रो अकाउंट ऑफ विट विषय मध्ये से गुटे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दैचंती मोस्ट स्पेसीज ऑफ विट एज मेटाफोर नले similitudes बोले सेम एज सिमिलरिटीज को दर्शाउची एल्गोरिस इंजिमन मोटोस parables fables dreams visions dramatic writing देखो ये सब क्वालिटीज थी बात all are the methods of allusion बोले कौन मत को कहतली देखो indirect reference तो indirect reference रे सब जाको से यूज करिवे कौन similitude को allegories को fables को visions को इत्यादि इत्यादि राइट एगडा को से pieces of wit बोल कर कहचंत कार एटा मिस्टर लॉक्स रो ओके सो तापरे से ट्रू विट विषय रे हमको थर्ड पॉइंट रे एक्सप्लेन करचंती कोन देखिबा चलो एज ट्रू विट जनरली कंसिस्ट in this resemblance and congruity of idea. False wit chiefly consists in resemblance and congruity. Sometimes of single letter congruity कहबे ताको as in anagram हम सब पढ़तिलो थर्ड पार्ट रे anagram chromograms lipograms and acrostics and sometimes of the syllables also syllables 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 बोले कोन पिला माने vowel sound in a word right so ये सब भीतर गुड प्रकार एफिनिटी से मानने एफिनिटी बोले कोन sameness तबे that will be considered as a wit right so sometimes what happens whole sentence not a whole poem cast into the figures cast throw some light बोलिया कथा into the figures of x इटा भी तमे आगो यूनिट रे पढ पिला माने आगो पेपर रे अल्ट्रास नै
Hmm. And this is all to show the idea of wit in the poems. This has been used. କିନ୍ତୁ ଇଏ ଇମ୍ଫାସାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଉପରେ ଦେଖ ଟ୍ରୁ ୱିଟ୍ ରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ରିଜେମ୍ବଲେନ୍ସ ଅଫ ଆଇଡିଆ ରାଇଟ୍ ଦ ଫାଲ୍ସ ୱିଟ୍ ରେ ଦ ରିଜେମ୍ବଲେନ୍ସ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍ ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ देयर इज अनदर काइंड ऑफ विट ए दुईटा छाड़ दियो ट्रू विट फॉल्स विट तापर से रिफर करछन्ते अनदर काइंड ऑफ विट अछि पिनी व्हाट इज दैट बोल के देखिला बेलको दैट इज मिक्स्ड विट ता विषय कोन कहछन देखिबा देयर इज अनदर काइंड ऑफ विट व्हिच कंसिस्ट पार्टली इन रिजेम्बलेंस ऑफ आइडिया बोले ट्रू विट रो खंड पार्टली इन रिजेम्बलेंस ऑफ वर्ड वर्ड बोले फॉल्स विट रो खंड राइट ये दुईटा मिक्स होकर मध्य केतरा राइटर्स तांको राइटिंग रे यूज करचंती जेमति कि फॉर एग्जांपल मिस्टर वालर बोल के जणे सो इटा से कोन बोल के करचंती आ जणे भी अछंती कोले सी ओ डब्ल्यू एल ई वाई एमान सब इटा होचे मिक्स्ड विट राइट सो हिसाब रे से इठी जॉन मिस्टर डाइडन विषय मध्य मिल्टन स्पेंसर एमान समस्ते ए टेक्निक्स अप्लाई करचंती दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड विट बोल के से रिफर करचंती ओके नेक्स्ट पॉइंट इज branches of mixed wit regarding this he said there are a number of branches of mixed wit but he has referred very few one he has chosen about Cole's his observance his witty how the passion of love in its nature has been thought to resemble same as fire लव को से फायर बोल के भी कहि देबे आइस बोल के भी कहि देबे बोले गोटे गरम आ गोटे ठंडा देखो केते कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू द विटी पोएट्स देयरफॉर हैज टेकन एन एडवांटेज of writing such things Cole observing the cold regard of the Mrs. Ice ताको प्लीज करिया पाई बोल के he produced here he see the comparison how he said the same time the power of producing love in her considered them as burning glasses made of ice देखो केंति खबर burning glasses बोले heat रो प्रतीक made of ice cold रो प्रतीक right finding himself able to live in the greatest extremist of love concludes torrid zone of habitable torrid zone means very hot and dry एरिया जोन बोले एरिया सेटा साइट दर्शाइचंती तापर से कोन कहउचन देखो his happy love is like heaven and unhappy love is like hell स्वर्ग और नरक heaven माने स्वर्ग hell माने नरक when it doesn't let him sleep it is a flame that sends up no smoke देखो फ्लेम बोले नियर झास सेंस ऑफ नो स्मोक ये गोटे कंपैरेटिव एनालाइजेशन कोले रो आ विषय से दर्शाइचंती मिक्स्ड विट रे एमाने केमती राइटिंग स्किल यूज करचंती अच्छा पोएट्स मिक्सेस द क्वालिटी ऑफ फायर विथ दोज ऑफ लव नहीं इन द सेम सेंटेंस स्पीकिंग ऑफ इट बोथ एज ए पैशन एज ए रियल फायर surprise the reader with those seeming resemblance and contradictions that make up all the wit in this kind of writing you can see this so tenu kori se कहउचंते बे mixed wit बेले कोन तार मीनिंग रे से कहउचंते mixed wit is a composition of a pun when writing word play करवाटा pun बेले and true wit which is more or less perfect as the resemblance lies in the idea or in the words right देखो lies in the ideas हेले सेटाला true wit lies in the word बोले सेटाला false wit its foundation are laid partly in falsehood and partly true देखिलो तेणु एटा मिक्स्ड हे गेला ये partly true partly अच्छा तुम 6th पेपर रे से ये दुईटा भितरु ओ कंक्लूजन रे आस्थिबो ओ छाड़ा सीधा तो 6th पेपर रे देखिबा एबे देखो
It may be expected since I am upon this subject se कहउचंती I should take notice of Mr. Drayden definition of it मु से Drayden रो definition of it को मते देखिबी जोटा कि which with all the difference that difference पिला माने difference माने respect difference means it respect that is due to the judgment right am first पढ़थिले resemblance wit and judgment बोल के बे judgment कथा आइला देखो तो से कहउचंती all the difference that is due to the judgment of some great so great a man is not so properly a definition of wit as of good writing in general से कौन डिफाइन करथिले देखा जाओ ए he has defined wit as a property of word देखो property of word बोली कहछन and thoughts words and thoughts adapted to the subject सहित सेट करके लिखिबाटा if this be a true definition of it I am apt to think it I am बोल के addition कहछन I am apt to think that Euclid was the greatest wit बोली से कहउचंती काहेकि that ever set a pen to paper right तेणु it is certain there never was a greatest property of words and thoughts adapted to the subject काहेकि यूक्लिड रे से उभय प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड्स एंड थॉट्स को प्रबल यूज करछंती दैट्स व्हाई से कहउचंती तम डेफिनेशन ठीक हेले यूक्लिड उटे बेस्ट राइटिंग हे जो विट्रो एग्जांपल भी हे जो बोली से दर्शाइछंती एमिति तापर से फ्रेंच मानकर ग्रीक मानकर गोथ मानकर फ्रांस मानकर आर्ट ऑफ राइटिंग रे सेम प्रकार फाल्सहुड एंड ट्रू वुड को मिक्स करके जो लिखाइछंती मिक्स्ड विथ विषय रे पूरा पूरी आउ केतरा एग्जांपल्स मध्य देके दर्शाइछंती एठी आ एते सब से भीतर को जाई हबनी देखो बेसी लंबा हो जाउची वीडियोटी तेणु कनक्लूड करवा ए सब एग्जांपल ग्रीक फ्रेंच गोथ्स क्रिटिक्स लेखक मानकर केमती प्रेजेंटेशन थिला रिजेम्बलेंस ऑफ कोन गोटे आइडिया कॉन्ग्रिग्युइटी तापर से ट्रू एंड फॉल्स को मिसे कि मिक्स्ड विथ रो केमती इन्वॉल्वमेंट हला ये सब विषय रे से फिफ्थ पार्ट रे दर्शाइछंती चलो अब नेक्स्ट जिबा सिक्स्थ पार्ट ओके सिक्स्थ पार्ट ता भाबो जे नेक्स्ट आ गोटे वीडियो करी पिला माने ये बेसी लंबा हो गेला 18 मिनिट ओके एबे मु तुम तो पॉइंट्स जाक कहली पॉइंट हिसाब रे डिस्क्राइब करी गली से हिसाब रे तुम स्टडी करो मु वेरी सून द सिक्स्थ पेपर माने द लास्ट पेपर ऑफ द 6 पेपर्स ऑन विट रो प्रेजेंट करबी देन आ गोटे वीडियो तैयारी करबी जाय रे तुमको टोटल सब जाक रो 6 पेपर ऑन विट रो गोटे कंक्रीट आइडिया दे देबी सीक्वेंस ता केमती जॉइंट कर जीवो तमे तेणु सब्सक्राइब कर देथो जदि सब्सक्राइब न करथियो तो सब जाक तमे पाइबाटा डिफिकल्ट हबो गोटे पाखरे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग थैंक यू वेरी मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब